Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Point. So in today's video we will be discussing DPP-21, which is based on binomial theorem. We have already discussed the first part of this DPP, that is from question number 1 to 10. In this video we will be dealing with the question number 11 to 20. So without delay, let's start with the discussion with the question number 11. So in this question number 11, you are supposed to find out the coefficient of x raised to 4 in the expansion of this. So I have already told you what is the expansion of x plus y raised to n in the previous video. If you did not watch the previous videos, please watch the videos to get the better understanding for in this topic, right? So the general term in that particular expansion is this tr plus 1 equal to ncr x raised to n minus r y raised to r. Here if you compare this x plus y with this expression, so you will get x equals to x by 2 and y equal to minus 3 by x square. So you place all these value and in place of n it is 10, right? So we have placed all the values and we have consolidated the power of x, right? So all these things what we have done, we have taken minus 1 raised to r from this term. So we have taken that outside, it is 10 cr, and we have got 2 raised to 10 minus r and 3 raised to r, and we have consolidated the power of x, that is 10 raised to x raised to 10 minus 3r, and this x, this value, that is 10 minus 3r, it must be equal to 4 because we have to find out the coefficient of x raised to 4. So whatever is the power of x, that has to be equal to 4. So we have calculated the value of r, we have got r equal to 2, and we just place this value r equal to 2 in this form, in this. So let me change the color of this color of ink, right? So we have to place the value of r equal to 2 in this expression. So what will we get? Minus 1 raised to 2, it will be positive. So 10 cr, that is 10 c2. If you place r equal to 2, it will be 3 raised to 2 upon 2 raised to 8, right? So if we calculate this 10 c2, you will get 45, right? You know what is ncr. What is ncr? It is n factorial upon r factorial into n minus r factorial, right? So we have calculated 10 c2 with this formula. We will get 45 into 3 raised to 2 is nothing but 9 upon 2 raised to 8, that is 256. So we have calculated this 405 upon 256. So which one is the correct answer? It is question number, it is first option, which is the correct answer for this question. So let us move to the next question, question number 12. In this question again we are supposed to find out the coefficient of x raised to minus 7. We will be dealing with the same formula, right? Here it is 11. The value of n is 11, so it is 11 cr ax raised to 11 minus r into minus 1 by bx square raised to r. So again we have consolidated the power of x and all other terms, right? So we have calculated, and whatever is the power of x, that must be equal to minus 7. So we will be getting r equal to what? 6. So now you will place the r equal to 6 in this expression, and we are supposed to take care of the coefficient only. We are not supposed to take care of this power of x. We have to take care of only the coefficient. So what will we get? If we place r equal to 6, it will be minus 1 raised to 6, which will be ultimately plus, right? And it is 11 c6, and here it will be a raised to 5 upon b raised to 6. Now you can match the expression. Here it is a raised to 6, so this cannot be the answer. Here it is negative, so this cannot be the answer. Here it is negative, so this cannot be the answer. So B is the right answer. Without calculating, ultimately we have got the answer of this question, right? So let us move to the question number 13. In the question number 13, again n is positive integer and 3 consecutive coefficients in the expansion of 1 plus x are in the ratio 6, 33 and 110. Then what is the value of n? Again
we will be dealing with the general term, right? What is the general term? In the expansion of 1 plus x raised to n. So the general term is this, tr plus 1 equals to ncr x raised to r. So we are taking care of only ncr, the coefficients only, not x raised to r. And 3 consecutive terms matlab means what? 3 consecutive terms means what? Once you take ncr and then ncr plus 1, then ncr plus 2. So these are the 3 consecutive terms, the coefficients, right? And they are in the ratio like this. So what is c1 by c2? c1 by c2, c1 is nothing but ncr, c2 is nothing but ncr plus 1, 6 upon 33. So this, if we calculate this ncr upon ncr plus 1, so what is the calculation for this? So if you can apply the formula, ultimately you, what will you get? Whatever is there in the this part, so you place this in the numerator, r plus 1, it will be r plus 1 in the numerator, r plus 1 upon n minus whatever is the smaller one, that is r. So you just subtract this from n, so it will be the answer for this, right? So r plus 1 upon n minus 1, it will be 2 upon 11 because it is equals to 6 upon 33 because of this given ratio. So ultimately we have got this relation, and after simplification we will be getting this one, the relation between n and r. It is a linear equation in n and r, right? And same thing, you apply c2 upon c3, you will get this thing, again you will get this relation, which one? This one, 3n minus 13r equal to 23, and just you solve these two relations, this relation number 2 and relation number 1, and we are solving these relations, we are getting n equal to 12. So that is what is the answer. C is the right answer. So now let us move to the question number 12. In question number 12, you can see here question number 12 very properly. The coefficient of x raised to 3 and x raised to 4. This question is talking about the two coefficients, that is the coefficient of x raised to 3 and x raised to 4. And what is the expansion? It is 1 plus ax plus bx square and 1 minus 2x raised to 18. So it is talking about the coefficient of x raised to 3 and x raised to 4. So ultimately the expansion lies in this part, right? So how will you get the coefficient of x raised to 3? Here the coefficient, the power of x is in this term x raised to 0, the power of x in this term is x raised to 1, the power of x in this term is x raised to 2. If we multiply the term which is the power of x raised to 3 with this one, which one? This one, x raised to 0, that is 1. So we will get the term which is having x raised to 3. If we multiply x square from this to this one, so again we will get the term which will have the x raised to 3. If we multiply x with this one, so we will get the power of x raised to 3 again, right? So in this expansion, which one? 1 minus 2x raised to 18. So what we have to take care of it? We have to take care of x raised to 1, x raised to 2, x raised to 3. These 3 power has to be calculated. So the best way to write the general term, that is this one. If we place r equal to 1, we will get the term which contains the x, right, which is 1 power of x, right? If we place r equal to 2, we will get x square. If we place r equal to 3, we will get x raised to 3. And the term which is containing x, that has to be multiplied by with this bx square, then only you will get x cube, right? And this term that is having x square, that has to be multiplied by with this term ax, then only we will get x raised to 3. And this term that is having x raised to 3, that has to be multiplied by this 1, then only we will get x raised to 3. So we are collecting the coefficient of x raised to 3. So we are writing this and this. How do they come? Now you can see how this term
came. You can see this. Let me talk about this. So this is minus 8 18C3. So this one minus 8 18C3. This has to multiplied by this one. So then only you can get the power of x raised to 3, right? And this one a. So this, you know, where is the x raised to 2? This is the x raised to 2. So this has to be multiplied by with this ax, right? So we will get x raised to 3 in this term as well, and ultimately we will this term is to be multiplied by this bx square. We will get x raised to 3 again. So we have collected all the power of x raised to 3. So we have got this relation in a and b, right? And if you are smart, we have got one relation and we are having answers here. You just look into the answers, which one is the matching, which one is the, you know, satisfying this equations. So it is B part which is satisfying this equation, right? So B is the right answer. Otherwise, what is the proper way? Proper way is that the way we have collected the power of x raised to 3, in the same way you collect the power of x raised to 4 and find out the coefficient, and you get the relation in between a and b, another relation. And these two equations, one equation is this one and other equation from this, I have already written the expression. ये वो वाले टर्म है जहां पे आपके पास x raised to 4 आ रहे होंगे, तो उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? तो यहाँ से भी a प्लस बी, a और b में रिलेशन आएगा, और एक a और b में रिलेशन आपके पास ये है. इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. अदरवाइज वी कैन solve this question with the option only. We have already got one relation and one relation is satisfied by the b only. So b is the right answer. ऐसा हो सकता था कि ये दो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता, तब आपको मजबूरी होती है कि आपको ये सॉल्व ही करना पड़ता दूसरा इक्वेशन. So this was question number 14. Now let us move to the question number 15. So what is to be done in this question number 15? You can see this question number 15. The sum of coefficients of integral powers of x in the binomial expansion. कहने का मतलब ये, जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ पावर में x की पावर में कुछ पार्ट फ्रैक्शन आएगा और किसी में इंटीग्रल पार्ट आएगा. तो जितने टर्म जिसमें इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम निकालना है, राइट? तो आपने क्या किया, जो भी आपके पास एक्सपेंशन दिया गया तो उसको आपने लिखा इस तरीके से, और आपने इसका प्लस साइन करके चेंज करके भी लिखा, फिर आपने इस तरह लिख दिया. फिर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा, देखो 50C0 दो बार आएगा, 50C1 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में है और यहाँ पर पॉजिटिव में है. ऐसे ही अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आना है तो नेगेटिव वाले कट जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले बचेंगे. और पॉजिटिव वाले हैं क्या, बेसिकली यहाँ पे 50C0 है, यहाँ 50C2 है और x स्क्वायर है. फिर ऐसे x रेज़ टू मतलब 2 रूट x रेज़ टू 50 तक जाएगा. ये वाला टर्म बचेगा, बाकी सारे कट जाएंगे. और इनमें आप देखोगे तो यहाँ पे x रूट x लिखा है लेकिन पावर में 2 है. ऐसे ही अगला टर्म में क्या आएगा, रूट x लिखा रहेगा लेकिन पावर में 4 आएगा. तो सारे रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. ऐसे आप लास्ट टर्म क्या लिखा है, रूट x लिखा है, पावर में क्या लिखा है, 50 लिखा हुआ है. तो ऑल द रूट्स विल गेट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ इवन पावर, राइट? तो जितने सारे यहाँ पे x की पावर्स आएंगे वो सब कैसे होंगे, दोज विल बी इंटीग्रल पावर्स ऑफ x, राइट? तो हमें इन्हीं का सम निकालना. यू जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, so you will get the coefficient this side in RHS, and what will you get in the LHS side? So it will be minus 1 raised to, minus 1 raised to 50, that is 50, that is 1. It will be 1, and if you place x equal to 1 this as well, so you will get 3 raised to 50. और इधर पे क्या है, इधर पे 2 चल रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे. So this will be the answer. So which one is the correct? It is C, which is the correct option for this question. Let us move to the question number 16. Now you can see the question number 16. In this question, ये आपसे पूछ रहा है कि इसका एक्सपेंशन करने के बाद वो सारे टर्म बताने हैं जिसमें x पावर 6 इन्वॉल्व है, और x पावर 6 दो जगह आ सकता है. एक तो ये 1 अपॉन x रेज़ टू 6 आ सकता है,
और दूसरा x रेज टू 6 आ सकता है। तो इसमें भी x रेज टू 6 इन्वॉल्व है और इस टर्म में भी x रेज टू 6 इन्वॉल्व है। तो कह रहा वो टर्म बताने हैं कि जिसमें x रेज टू 6 इन्वॉल्व है। तो हमने क्या किया, सिंपली इसका हमने जनरल टर्म लिखा, x की पावर को कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद x की पावर में क्या आ रहा है, 22 माइनस 3r आ रहा है। तो 22 माइनस 3r को हमने 6 के इक्वल किया, r की वैल्यू निकाला, r की वैल्यू कैसी आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये एनसीआर में जो r होता है ना, r इज ऑलवेज अ नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू n, एंड r कैन नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू, एंड n एज वेल, n भी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता है। तो r की वैल्यू यहाँ पे कैसी आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है इस पूरे एक्सपेंशन में कहीं पर भी x रेज टू 6 नहीं आएगा। दूसरे वाले में जरा देखें, क्या x रेज टू माइनस 6 आएगा क्या, हमने क्या किया, जो भी x की पावर थी उसको हमने माइनस के इक्वल किया। यहाँ पर भी r की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, जो कि इट इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू -6 रखने से r की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, और r की वैल्यू हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, आई कुड से नॉन नेगेटिव इंटीजर बिकॉज यू कैन नॉट से पॉजिटिव, because r can be 0 and 0 is not positive, right? So there is no term which is involving x raised to 6, so D is the right answer. So let us move to the question number 17. In this question you can see this question, there is expansion, है ना, वो आपको एक्सपेंशन दिएगा और आपसे कह रहा है कि C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इनकी वैल्यू आपको बताना है। कहने का मतलब क्या है, जो आपके इवन नंबर के, मतलब जो जिसके लिए r की वैल्यू इवन होती है, उन नंबर्स के लिए आपका इनका कोएफिशिएंट का सम निकालना है। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स रेज टू n का एक्सपेंशन तो यही होता है, तो दिया गया है। फिर हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन भी लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या होगा, जो nc1x इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव कट जाएगा, nc2 पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा, फिर ऐसे nc3 पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास टर्म आ जाएंगे। और आपने क्या किया, फिर x रेज टू 1 रख दिया पूरे एक्सपेंशन में, ये आपके पास 2 रेज टू n आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इधर पे 2 आपके पास आ रहा है, अंदर ब्रैकेट में क्या आ रहा है, nc0 nc2 nc4, यही आपको चाहिए भी था, 2 से डिवाइड कर लिया तो 2 रेज टू n माइनस 1 आ गया। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर, दैट इज A is the right answer. Now let us move to question number 18. In this question number 18, look into the question. आपसे ये कह रहा है कि वो इंटरवल बताना है in which x must lie so that इसका जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है in the expansion of this 1 minus x raised to क्या है, 1 minus x raised to 21, इसके एक्सपेंशन में जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है उसके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी जो है वो ग्रेटेस्ट है। मतलब अल्टीमेटली आपको ये पता करना है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां पे ग्रेटेस्ट है। तो कोई भी n दिया है उसके लिए आप ये तीन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन सी, n+1/2, n+2/2, n+3/2, जिसके लिए ये तीनों वैल्यू, जिसके लिए इंटीजर है, जैसे यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे इंटीजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, तो ये इस टर्म में बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम होगा और इस टर्म में भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम होगा। और ये 11th टर्म निकालने के लिए जनरल टर्म में r = 10 रखते हैं, और 12th टर्म निकालने के लिए जनरल टर्म में r = क्या रखते हैं, 11 रखते हैं। और तुमसे कह रहा है जो r = 10 है, मतलब यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम है, तो वही टर्म क्या है, ग्रेटेस्ट है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब क्या, 11th नंबर का टर्म 10वें नंबर के टर्म से ज्यादा है। तो आपने एक कंडीशन लेके चले, तो 11th नंबर का टर्म इधर 11c10 लिखा, x⁻10 is greater than 20c9 x⁻9। हमने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया, क्यों नेगेटिव नहीं लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉड वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ से हमने देखा x की वैल्यू क्या आ गई, x⁻5/6 आ गई। सॉल्व करने के बाद वही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि जो 12th नंबर का टर्म है 13th नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 11th नंबर का टर्म है और जो 12th नंबर का टर्म दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, NGT, बोथ आर NGTs, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो हमने 11 के लिए देखा कि वो 10 से बड़ा होगा, और 12 के लिए देखा वो 13 से बड़ा होगा, और 11 और 12 वाले नंबर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे इन दिस एक्सपेंशन। हमने ये वाला लगाया T12 इज ग्रेटर देन T13, सारी वैल्यू रख दिया, x के लिए कंडीशन निकाला, x के लिए कंडीशन क्या आ गई, x⁻5/6 आ गया।
और यहाँ क्या आ गया, x रेज टू x इज ग्रेटर देन 5/6, 6/5, यहाँ पे 6/5, यहाँ 5/6, इन दोनों कंबाइनली देखा तो इस तरीके से बना जाके, तो इसका मतलब ये होता है x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा 5/6, 6/5, मतलब इससे बड़ा इससे छोटा। So which one is the right answer? B is the right answer. So now let us move to the question number 19. Question number 19. You can see this question number 19. A and B are the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n और 1 plus x raised to 2n minus 1. हमने क्या किया, पहले वाले का gt लिखा और उसमें हमने r इक्वल टू n रखा, तो x raised to n का कोफिशिएंट निकाला which is equal to a, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। ऐसे ही हमने दूसरे वाले एक्सपेंशन लिखा, जनरल टर्म लिखा, मतलब जनरल टर्म में r इक्वल टू n रखा, तो आपके पास यहाँ पर भी x रेज टू n का कोफिशिएंट आया, दैट इज b इक्वल्स टू 2 रेज टू 2n माइनस 1 cn, और हमने a बाई b निकाला, सॉल्व किया तो इस तरीके से आ गया, आपके पास आ गया 2, सो a बाई b इक्वल टू 2, सो a इक्वल टू 2b, सो व्हिच वन इज द राइट आंसर, c इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे इसको जस्ट एक्सपैंड इट, you just expand it, there is nothing in the question, right? So now let us move to the question number 20. So it is again a very easy question. आपको यहाँ पे एक एक्सपेंशन दिया गया है और ये बात क्लियर है कि देखो यहाँ पे अंदर x पावर 2 है, बाहर 6 है, तो इसके मैक्सिमम पावर क्या आएगी, 12 आएगी, बस सीधी सी बात ये है। अब आपको वैल्यू निकालनी है a2 a4 डॉट डॉट a12 तक, मतलब जो ऑड डिग्री वाले टर्म है उनके कोफिशिएंट का सब निकालना है। आपने क्या किया, x को 0 रख दिया पूरे एक्सपेंशन में, तो ये x को जब 0 नहीं सॉरी 1 रख दिया, 1 रखेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2, ये -2 की हो जाएगी, इधर पे आ जाएगा 0, तो 0 को क्या आ गया 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 लास्ट में a12। ऐसे ही फिर आपने क्या रखा, x इक्वल टू रखा आपने -1, तो इधर पे आ जाएगा 2⁶, और इधर पे इस तरीके से बातें आ जाएंगी। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को किया ऐड, जब ऐड करेंगे तो a1 a2 कट जाएगा, नहीं a1 और a1 कट जाएगा, a3 और a3 कट जाएगा, क्या बचेगा इधर पे 2 1 1, तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2a2 बचेगा, यहाँ पे 2a4 बचेगा, बस लास्ट में 2a12 बचेगा, सभी से 2 कॉमन कर लो तो आपके पास ये आ गया, और ये आपके पास 2�6 है, और जब 2�6 का मतलब होगा 64 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 31, और इधर भी तो 1 है, 1 को इधर भेज दो तो आ जाएगा 32 आएगा, 31 बचेगा यहाँ पे। सो इसका आंसर आपके पास आएगा 31। सो डी इज द राइट आंसर। This is all about this video. If at all this video helps you in any form, so please like the video, share the video and subscribe the channel. Stay tuned for the next part of this video. Thank you.